चलिए देखें, इफ यू सी दिस स्ट्रक्चर, तो हम इसको किस तरह कंप्लीट कर सकते हैं। वी नो दैट दिस इज वन ऑफ द मैकेनिज्म दैट वी ऑलरेडी टॉक अबाउट। यहाँ आप देख सकते हैं जो चीजें मैंने आपको बताई थी वो सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्ली एरोज आर इंपॉर्टेंट, लोन पेयर्स आर इंपॉर्टेंट, एंड इलेक्ट्रॉन्स एंड द चार्जेस आर इंपॉर्टेंट। एवरीथिंग जो मैंने आपको वहां पर मेंशन की थी, आपको एम्फसाइज किया था उसको याद करने के लिए, वो सारी चीजें यहाँ मौजूद है। ठीक है, सो व्हाट इज द फर्स्ट कर्ली एरो? वी नो दैट कि ये पार्शियल पॉजिटिव है, तो कार्बन डबल बॉन्ड अटैक ऑन दिस इज द फर्स्ट कर्ली एरो दैट यू नीड टू कीप रिमेंबर, एंड देन दिस बॉन्ड breaks. This is the second curly arrow you need to keep remember. एक नंबर मिल गया आपको। ठीक है, यहाँ आपको एक नंबर मिल गया। एंड वी नो दैट कि जब आपके पास यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो हम हाइड्रोजन उस कार्बन पर अटैच करेंगे जहां पर ऑलरेडी हाइड्रोजन ज्यादा है। यू कैन सी दिस, इस वाले कार्बन पर ऑलरेडी हाइड्रोजन ज्यादा है, तो हमें हाइड्रोजन भी इसी पे अटैच करना है। तो ये जो आने वाला अपकमिंग हाइड्रोजन है, हमने इसको यहाँ अटैच कर दिया, और ये CH3 अपनी जगह पर है, ये हाइड्रोजन अपनी जगह पर है। इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती ले लिया गया है, तो इट इज कंप्लीट पॉजिटिव। complete positive, it is not partial। ठीक है, and because of the heterolytical fission of the bond, और ये जो आयोडीन है इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये कंप्लीट नेगेटिव हो गया, कंप्लीट नेगेटिव। ठीक है, नाउ ये नेगेटिव अटैक करेगा इस पॉजिटिव पे, तो ये एक और कर्ली एरो आ गया। ठीक है, एंड इन लास्ट इट इज गोइंग टू बी फॉर्म लाइक दिस कि यहाँ पर आयोडीन और यहाँ पर हाइड्रोजन। इज दैट क्लियर मेरे बच्चों? Yes, everyone. Is that clear? Yes. So you need to understand this. आपके पास जो एक नंबर मिलेगा वो आपको मिलेगा कर्ली एरोस का। ठीक है ना, एक नंबर आपको मिलेगा कंप्लीट चार्जेस का, जो कार्बन पे पॉजिटिव लगेगा और आयोडीन पे जो नेगेटिव लगेगा उसका एक नंबर आपको मिलेगा। दो नंबर ये हो गए, और तीसरा नंबर आपको मिलेगा सही प्रोडक्ट बनाने का, क्योंकि यहाँ पर इसने मेंशन कर दिया है कि यू नीड टू शो द मेजर प्रोडक्ट। अगर आपने गलती से यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर आयोडीन लगा दिया तो आपका एक नंबर कट जाएगा, और अगर आपने गलती से पार्शियल चार्जेस यहाँ दिखा दिए पॉजिटिव और यहाँ पार्शियल नेगेटिव दिखा दिया या पार्शियल पॉजिटिव दिखा दिया, तो एक नंबर गया। ठीक है ना, तो आपने ये याद रखना है कि ये चीजें आप जहन में रखें। दिस इज नॉट पार्शियल, पार्शियल सिर्फ ये वाले होते हैं। ठीक है ना, और ये आपके पास माइनर प्रोडक्ट और मेजर प्रोडक्ट का सीन भी आपको याद रखना है। So keep remember these things, it will give you 3 marks for that. Is that clear, every one of you? Yes, sir. And in the first part you can see this, that what they are saying, identify which of one iodopropane or two iodopropane is a major product. And we know the reason why major products from. We know that this is actually the product that we form right now over here. You can see this is the long chain, right? This is the long chain, and on the second carbon we have iodine, so this is a major product. So you can say that 2 iodopropane, this is the complete propane, 3 carbons, and the second carbon having iodine, so it can be named as 2 iodopropane. 2 iodopropane is the major product, so you got 1 mark for this, right? It is the major product. So you can say that 2 iodopropane form more stable carbocation, or you can even use the word कि भाई ये वाला कौन सा कार्बोकैटाइन है। देखो ये कार्बन के सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, एक हाइड्रोजन के साथ है, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, तो ये सेकेंडरी कार्बोकैटाइन है। We know that. So you can say that 2 iodopropane form secondary carbocation, right? Which is more stable, right? Because of the greater inductive effect from the alkyl radicals, right? So 2 iodopropane forms secondary carbocation, which is more stable due to more inductive effect, from alkyl chains. ठीक है भाई? So that is why it is major product. All clear बच्चों? If they use for suppose 3 marks over here,
to ask the answer from you. So you can even use the word activation energy as well. So you can say that the secondary carbocation has a more inductive effect. That is why it is more stable than the other one, right? So that's why it has lower activation energy. That is why it is going to form more product, the more major product. Got it, every one of you? Yes. एनी प्रॉब्लम? अब जिसने भी इसको कंप्लीट कर लिया है वो इसकी पिक्चर ले सकता है और अपने आंसर से चेक कर सकता है कि कहीं आपने कोई चीज गलती से गलत तो नहीं कर दी है, कोई चीज आपने मिस तो नहीं कर दी है, कहीं पार्शल की जगह परमानेंट तो नहीं पॉजिटिव और नेगेटिव लगा दिया, कहीं परमानेंट की जगह पार्शल तो नहीं लगा दिया, कहीं कर लिया एरोस तो आपने स्ट्रेट नहीं बना दिए. सो यू नीड टू सी ऑल दीज थिंग्स. ऑलराइट एवरी वन ऑफ यू? सर. जी बेटे. Sir, instead of writing secondary carbocation has more stable inductive effect, तो हम लोग उसकी जगह ये लिख सकते हैं 2-iodopropane will be the most product form as it is a secondary carbocation and it is more stable. देखो इंडक्टिव इफेक्ट की तो बात आपने करना पड़ेगी ना. व्हाई दे आर मोर स्टेबल, यू नीड टू एक्सप्लेन दिस ना कि वो मोर स्टेबल क्यों है. सेकेंडरी कार्बोकैटाइंस या टर्शियरी कार्बोकैटाइंस मोर स्टेबल क्यों है? बिकॉज दे हैव मोर अल्काइल रेडिकल्स एंड अल्काइल रेडिकल्स हैव अ एबिलिटी, यू कैन से दैट दे हैव एबिलिटी टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स इनटू द अदर सब्सटेंसेस ना, या इनटू द पॉजिटिव टर्मिनल. तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स उनको दे रहे हैं, वो प्रोवाइड कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जिसकी वजह से वो स्टेबलाइज हो रहा है. तो जब तक आप इंडक्टिव इफेक्ट की बात नहीं करोगे तो ये बात क्लियर ही नहीं होगी कि व्हाई इट इज मोर स्टेबल, राइट? Yes. एनीथिंग एल्स बच्चों? और किसी को कोई सवाल पूछना है? इंडक्टिव इफेक्ट ध्यान में बिठा लो, ये लिखना है लाजमी पेपर में. इंडक्टिव इफेक्ट का लफ्ज नहीं भूलना, लिखने से पहले 1 मार्क देके जाएगा ये वर्ड. ठीक है बच्चों? एनी क्वेश्चन, एनीवन एल्स? ऑल क्लियर? So Yes, sir. just remembering this one and moving towards the next question of organic. So you can see this over here. We have this question number 3. So it is starting from here. So now it's your turn. पहले आप इसको complete करेंगे, उसके बाद here we have one more question that we need to solve बच्चों. और ये part क्या करना है हमें? पहले वाले में वो पूछ रहा है what is the name for compound T? That's quite simple for us. I think we can easily solve this. This is the long chain, right? And this is a branch. This is a branch. We can name this. The long chain contains 4 carbons, so it is bute, right? This is bute because of the 4 carbons, and also we have double bond on the second carbon, so it is bute-2-ene. Is that right, bacho? And Yes, as 2 branches, so we can call them, it is dimethyl bute-2-ene. This is dimethyl bute-2-ene, and it is second and it is third, so you can even mention the place over there, 2,3 dimethyl bute-2-ene. This is the name of this compound. And then after that, they are asking for the isomer, skeletal formula of the structural isomers of T. And they're not asking for anything like यार ये वाला होना चाहिए, वो वाला होना चाहिए. ये कह रहा है कि आप कोई सा भी बना दें जो कि सेस और ट्रांस शो करता हो, सेस और ट्रांस आइसोमर शो करता हो, ऐसा कोई आप स्ट्रक्चर इसका बना दें. So I think it's not difficult for us because we know that what is cis and what is trans. So just you need to draw 2 carbons first. I'm just going to draw it in the condensed form, then we will convert it into skeletal. You can even do this with a pencil as well in exam, then you need to rub that, right? So ये हो गया आपके पास carbon carbon double bond. This is the first thing that should be over there for the cis and trans isomers. And then आपके पास क्या होना चाहिए? इन दोनों के ऊपर एक जैसा होना चाहिए. तो आई एम जस्ट सब्स्टिट्यूटिंग हाइड्रोजन ओवर देयर, और बाकी बचे 2 ये अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं. तो वी हैव टोटल 6 कार्बन्स. वी हैव टोटल 6 कार्बन्स. तो आप चाहे 2 इधर करें, 2 इधर करें, या 3 इधर करें, या 1 इधर करें, आपकी मर्जी है. सो आई जस्ट वांट टू डू के यार मैं 3 कार्बन्स इधर कर देता हूँ, ठीक है ना, C3H7, और मैं 1 कार्बन इधर कर देता हूँ, तो इट इज CH3. सो यू कैन सी दिस कि हमारे पास कंपाउंड पूरा हो गया, 6 कार्बन पूरे हो गए और डबल बॉन्ड भी आ गया. तो इसका मतलब कि ये सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए इसका. बस ये सिस एंड ट्रांस शो कर सकता है, तो इसका स्केलेटल अब हम बना देते हैं. सो दिस इज 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4,
5, 6. These are the 6 carbons we have, and between second and third we have double bond. So over here we have double bond. Uh-oh, yeah, okay, again, this is double bond, right, bacho? Any problem? Is that clear, bacho? Yes, sir. Then in the C part 1, they are asking about on the diagram, draw the orbitals that represent the pi bond that is also the present in T. So you can simply show the pi bond over here. We know that कि यहाँ पर p electrons मौजूद होंगे जो कि आपस में शेयरिंग करेंगे, और वो किस तरह शेयरिंग करते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन इसका और इसका आपस में शेयर हो जाएगा. So it will be like this, the pi bond over here, and यहाँ पर एक ऐसे और ऐसे, तो आप इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हो pi bond को, ठीक है ना. If you want to draw it like this, you can even draw like this. और अगर आपको ये लगता है बुरा तो आप इसको आसान तरीके से भी बना सकते हो. वो कैसे बना सकते हो, आप इसको बना सकते हो ऐसे. ये हो गया आपके पास ये पाई बॉन्ड, ये आपके पास हो गया दूसरा पाई बॉन्ड. यू कैन इवन ड्रॉ लाइक दिस. ओके बच्चों? जी सर. And all the time whenever Yes. we have carbon double bond, all the time when we have carbon double bond, so actually you can see this, we have 3 sigma bonds, and this fourth one is actually pi bond, huh? So actually we have 3 sigma bonds. We have 3 sigma bonds. So 1 s and 2 p orbitals are over there involved in sigma bonding, so you can use that. Is sp2 hybridization. Whenever you will find carbon double bond, it's always sp2 hybridized. And if you have carbon single bond, or if you have all 4 bonds of carbon, so then you can see this all are sigma bonds. So it is 1s and 3p, so it should be sp3. And if you have carbon triple bond, so you can see this over here we have 2 sigma bonds only, right? So it should be sp1. Is that clear, bacho? We will do this again in the region of bonding as well, right? Then in the next part, you can see this. This is long part. They are saying that our reaction scheme starting with T is shown. Reaction to occur in the presence of catalyst. Knowledge of the mechanism for this reaction is not required, right? You just need to see this, that the double bond is now no more over here. You just need to mention the things over here. This is double bond, and over here the double bond is not furthermore with us. But after the removing of double bond, you have OH on both the sides. And we know that it's quite simple for us. Whenever double bond breaks and on both the carbons we have hydroxyl, so it's all about what? Dilute, cold, acidified potassium manganate 7. It is the property of KMNO4, and it should be in dilute and cold conditions. So you can say that it should be cold, dilute, cold, dilute, acidified. We should use acid over there for the fast reaction. Acidified potassium manganate, and 7. You must need to write 7 over there because this is the oxidation state of potassium. Oh, sorry, this is the oxidation state of manganese over here. Because of the transition metal compound, you must need to show the oxidation state. क्योंकि अगर आप transition metals compound में oxidation state नहीं show करते हो, तो इसका मतलब ये है कि आपको नहीं पता आप किसकी बात कर रहे हो. For suppose if I just consider iron, so iron has 2 oxidation state, 2 plus and 3 plus. So we have 2 different compounds of iron with oxygen. If you talk about iron 2 oxide, so it will be Fe2O. Iron 2 oxide is like FeO. सही है. और अगर आप बात करते हो iron 3 oxide की, so we will cross multiply the oxidation states, right? So it will be Fe2O3. So these are 2 oxides of iron. So we should mention the name of them. So it should be iron 2 oxide ताकि पता चले कि ये FeO की बात हो रही है. And over here it should be iron 3 oxide ताकि पता चले it is Fe2O3 की बात हो रही है. अगर आप oxidation state mention नहीं करोगे तो formula उसका wrong हो जाएगा, और जब formula wrong हो जाएगा तो it will not award you a mark over there. So you need to mention the oxidation state all the time if you are writing the name of transition metals. Is that clear, every one of you? Yes. Okay, so let's move on towards the next question that is related to this
right? So this is the second part and third part of C and D, and then E you will have. You need to solve this first, then I will answer you how can we answer this. अगर आप second part को देखो, so the second part is saying that state and explain how 2,4 dinitrophenylhydrazine, which is DNPH, can be used to detect the presence of V as a product of reaction 2. So you can see this बच्चों कि आपके पास अगर आप product की बात करते हो यहाँ पर, so we have carbon and oxygen double bond, which is actually carbonyl functional group, right? So whenever you have carbonyl functional group, even it is either it is aldehyde or it is ketone, we can use DNPH for the presence, for the test check for the presence, right? अगर ये aldehyde होता तो we can use even Tollens and Fallings reagent as well, but right now अभी ये कीटोन है तो हम DNPH यूज कर सकते हैं, और कीटोन हो या एल्डिहाइड आप दोनों के लिए ही DNPH यूज कर सकते हो. So you can say that due to the presence of carbonyl group, DNPH shows yellow precipitates, right? It will show yellow precipitates on addition, right? On addition of DNPH. Is that clear, bachcho? Right? Yes. And then the second part, the third part is actually the part of IR spectrometry, and we have not done yet. तो अभी इसको मैं छोड़ रहा हूँ. 2 मार्क्स का बहुत इजीली हम आराम से कर सकते हैं इसको कंप्लीट करने के बाद. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक का स्टार्ट हम इसी से करेंगे, उसके बाद फिर ये क्वेश्चंस आपको आसान लगेगा. Let's talk about the part E. What part E is saying? Part E is saying that V is used in a wide range of organic reactions. Some reactions of V are shown. And over here we have a reaction scheme. V and W were colorless and soluble in water. State what you would observe in reaction number 3. So reaction number 3 is what you can see this. In reaction number 3, you are using alkaline aqueous iodine. You are using alkaline aqueous iodine, and we know that ये वाली जो condition है ये iodoform reaction की है. तो इसके अंदर जो आते हैं आपके पास yellow precipitates आते हैं. तो you can say that yellow precipitates would be observed. Right, and then they are saying reaction 3 is a redox reaction. Identify which of the reactant is reduced in this reaction. Which one is going to be reduced? In the start, you know that iodine is used in the elemental form, but after that it is going to be converted into CHI3. So iodine is 0 in the start, the oxidation state, and in the end it is going to be -1. Right, so you can see this 0 to -1, it is decrement in the oxidation state, and the decrement in the oxidation state is actually reduction. So you can say that iodine is going to be reduced over here, right, bacho? Then they are saying that construct an equation for reaction 4. Use hydrogen in the equation to represent an atom of hydrogen from NaBH4. NaBH4 एक reducing agent है, तो जब भी वो hydrogen produce वो provide करेगा वो इस तरह देगा, मतलब atomic form में देगा. अगर ये हाइड्रोजन गैस यूज कर रहे होते तो हम H2 लिख सकते थे, बट रिड्यूसिंग एजेंट जब भी हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा वो एटॉमिक फॉर्म में प्रोवाइड करेगा. दैट इज व्हाई रिएक्शन थोड़ा सा फास्ट होता है. ठीक है, तो आपके पास बन क्या रहा है? आपके पास रिएक्शन नंबर 4 में अगर आप देखें, so you have this product in the reaction number 4, right? So how many carbons we have? 1 2 3 4 5 6 carbons we have. Definitely we have 6 hydrogens in the product, right? 6 carbons, and then we have 1 oxygen as well, and the rest are hydrogens. So यहाँ पर 3 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन. So यहाँ पर आपका जो कार्बन है इसके बाद एक हाइड्रोजन और होगा. So total we have actually 14 hydrogens over here. So it will form C6H14 and O. So you can see this. Initially you will have 12 hydrogens, and now you have 14 hydrogens. So for the balancing of equation, you actually require 2 atomic hydrogens. Is that right, bacho? Right, everyone? Right. Okay. Then if you talk about the rest of the part of this question, they are saying that draw the 2 optical isomers in the box provided. X is a mixture of 2 optical isomers. Where is X? Yes, this is X.
they are saying that this is a mixture of two optical isomers, and you can see this. This is the chiral center, which is attached with OH. तो उसके नीचे CH3 लगा हुआ है, इस तरफ OH लगा हुआ है, और दो तरफ आपके पास दो अलग चीज लगी हुई है हाइड्रोजन के साथ. So we need to show it in the form of optical isomers. So you can see this. जो कार्बन है आपके पास, उसके ऊपर एक तरफ कार्बन की चेन्स लगी हुई है, और उस कार्बन पर भी 3 कार्बन की चेन्स लगी हुई है. ठीक है, और एक तरफ इसके पास क्या चीज है बच्चों, एक तरफ इसके पास OH है, और एक तरफ इसके पास क्या चीज है, हाइड्रोजन है, और एक तरफ इसके पास क्या चीज है, CH3 है. So this is one of the आपके पास स्ट्रक्चर जो आपने बनाया है उसको आपने इन द फॉर्म ऑफ टेट्राहेड्रल बना लिया ताकि आपके लिए आसानी हो जाए. वी नो दैट दिस कार्बन इज एक्चुअली व्हाट, दिस इज एक्चुअली कार्बन सेंटर, दैट इज व्हाई मैंने इसको सेंटर लेते हुए तो बाकी चीजें बनाई हैं. इफ यू वांट टू कन्वर्ट दिस इनटू ऑप्टिकल आइसोमर्स, सो वी जस्ट नो दैट कि ये मिरर इमेज इसकी बनेगी. तो मैं क्या करूंगा इसको कि मैं OH को इधर भेज दूंगा और H को मैं उधर भेज दूंगा, और ये जो कार्बन है ये अपनी जगह पर सेम एज इट इज रहेगा. बस आपने एक थोड़ा सा काम ये करना है कि अभी CH3 का मुंह इस तरफ है, CH3 के मुंह को उस तरफ कर दें हल्का सा. So this will be the what optical isomers of this molecule, right बच्चों? Is that right बच्चों? Yes, sir. Yes. Okay, and then the next part is saying both optical isomers of X can be dehydrated to form single product. Why? Give the reagent conditions to required for the reaction 5. Reaction 5 में अगर हम देखें तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया है, हाइड्रोक्सिल हट गया है. तो बस आपको ये याद रखना है कि भाई हाइड्रोक्सिल हटेगा और डबल बॉन्ड बनेगा तो इसका मतलब वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुआ है. और यहाँ पर उसने लिख भी दिया है इट इज डिहाइड्रेटेड. डेफिनेटली वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर क्या हुआ है, एलिमिनेट हुआ है. तो उसके लिए कंडीशंस क्या चाहिए होती हैं, यू ऑल नो दैट. यू कैन यूज ओवर हियर concentrated sulfuric acid along with 200 degrees Celsius temperature. And if you don't know this, you can even use what, you can even use aluminum oxide over here along with 350 degrees Celsius temperature, right बच्चों? This is used for the dehydration process. ठीक है, I just recommend you to write sulfuric acid because बहुत सारी जगह पर आपको sulfuric acid यूज करना होता है. एस्ट्रिफिकेशन में भी आप sulfuric acid यूज करते हो, उसकी वजह भी यही होती है कि वहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहे होते हैं, तो उसको वो डिहाइड्रेट यानी एब्जॉर्ब करने के काम आता है. कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, इस वजह से हम उसको यूज करते हैं. देन दे आर सेइंग व्हाई कैन फॉर्म एन एडिशन पॉलीमर ड्रॉ वन रिपीट यूनिट. वो रिपीट यूनिट मांग रहे हैं इसका, और ये बड़ा आसान काम है, रिपीट यूनिट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं. जस्ट लुक एट ओवर हियर कि आपके पास ये चीज है, ये जो Y है आपके पास, इसका रिपीट यूनिट आपने सिंपल बनाना है, पॉलीमर आपने इसका बनाना है. कैसे बनेगा देखिए, मैं इसको यहीं बना देता हूँ. ठीक है, दिस इज द कार्बन जिसके पास डबल बॉन्ड है, दिस इज द कार्बन लाइक दैट ना, और जो लास्ट वाला कार्बन है इसके पास 2 हाइड्रोजन मौजूद है. ठीक है, और इस वाले को देखते हो तो इसके पास 1 हाइड्रोजन और है, और बाकी ये पूरी चेन लगी हुई है. ठीक है ना, एक कार्बन अटैच है, और उस कार्बन के पास भी 3 कार्बन मिथाइल अटैच है. सिंपल इज दिस. ठीक है ना, अगर आप इसको पॉलीमर में कन्वर्ट करना चाहते हो और आपको जस्ट 1 रिपीट यूनिट दिखाना है, व्हाट यू नीड टू डू बच्चों, यू जस्ट नीड टू रिमूव डबल बॉन्ड. You just need to remove double bond. डबल बॉन्ड हमें हटाना है, और हमें क्या लगाना है, हमें extended bonds लगाने हैं, and this is polymer. Is that clear बच्चों? Yes, sir. Any problem? No, sir. ठीक है, उसके बाद अभी कोई और सवाल बचता है क्या? नहीं. In the last part they are saying reaction 6 does not proceed quickly at room temperature. Suggest why this is the case. Why this is the case. So simple is that if the reaction is slow, if it requires more energy to start, so you need to say that this reaction must require high activation energy. That is why this is slow reaction at room temperature. Okay बच्चों? Yes. So you can say that this reaction required higher activation energy, or the reaction has higher activation energy. That is why it is slow at room temperature and pressure. Any problem, any one of you? So you can ask any type of question that you want to ask.